So the command is for data retrieval is a select statement. उसमें DDL में create, alter, rename, truncate, drop, that was the command. In a DML, insert, update, delete, and merge. In a DRL, DRL means data retrieval language. How to retrieve the data? Only one command, select statement. So this is our article. Now, if we talk about the retrieval of the data, then there are two operations: selection and projection. Selection means to select the record from table. See, this is a table. Assume that there are 10 rows are there. So I can retrieve the row number 2, row number 4, row number 8, and row number 9. So to retrieve the record from the table, it is known as a selection operation. What is projection? To retrieve the column of the table. Means if in my table I have 10 columns, I am retrieving column number 2 and column number 4. That is your projection operation. Here, if I will select the project operation, then in output there will be only 2 columns. There will be only 2 columns, but it will contain the record of all employees or all table. So record are as number of rows in the table, but only 2 columns. So that is a projection operation. In a selection operation, your all. Sir, repeat करो ना sir. Sir, नेट जतुरी तो એટલે से कट થઈ ગયો आवाज. Projection means what? No need to extract all the record, all columns. Hello? What? Projection means no need to access every column. Suppose I want to check what is result of your student. So what I will do, I will extract only enrollment number and CPI. 2 column मुझे चाहिए, लेकिन सभी student की, not only for 10 students. So whenever I do the projection operation, enrollment number and your result, then it will contain the record of all students, all 78 students, or all 100 students. I do not need your email ID, contact number, address, वो सब नहीं चाहिए. अभी मुझे सिर्फ result देखना है. So that is your projection operation. So in projection, all row will be there, but only specific column will be there. जो आपको extract करना है. In a selection, all column will be there. Column की choice नहीं है, सभी column आएगी, but not all row are there. Row means record. सिर्फ student number 2, student number 4 और student number 8 और student number 9. मुझे उसका ही देखना है कि ये 4 student का क्या content है. So in a selection, all column will be there, but row are restricted. In a projection, all row will be there, but column are restricted. Third is a join. We have separate practical for that. I want to extract few columns from table number 1, and I want to extract few columns from table number 2. So I have to do I want to retrieve the data from multiple tables. In real life practical, in real life environment, whatever the softwares and websites are there, whatever data you are presenting in your screen, it is not necessary that data comes from a single table. Data can come from more than 10 tables. अलग-अलग टेबल में से अलग-अलग display हो रहा है. So if we want to access data from multiple tables, then that operation is known as a join operation. Okay. So data retrieval language perform 3 operations: projection, selection, and join. Projection and selection we will discuss in this practical. Join we have separate practical. What is the syntax that we know? Select is a command. Star. Star means everything, every row, every column from table. Okay. If I do not want every column, here select star from department. जितने department है, it will display the all department and all columns. Here there is no choice. Star means everything. All record, all columns. If I want to read a specific column, ये सब हमने आप execute किया, आपको पता ही होगा. Select column number 1, comma column number 2, column comma करके जितनी column को लिखना है वो लिखो from table name. So it will display only 2 columns कि हाँ department ID क्या है और location ID क्या है. That's it. It is not a star. Okay. तो ये क्या हुआ? Selection हुआ या projection हुआ? What is this? ये query क्या है? इस query will generate the output. तो ये कौन सा operation? Selection हुआ कि projection हुआ? Projection. Yes, projection means we do not require every column, specific column. That is projection. Here,
दिस इज प्रोजेक्शन एज वेल एज सिलेक्शन, सभी रो सभी कॉलम। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करके आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको सब पता है। सम गाइडलाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर नेवर केस सेंसिटिव। आप कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, स्टेटमेंट कैन बी फ्रॉम वन और मोर लाइन, एक लाइन में लिखो, दो लाइन में लिखो, 5 लाइन में लिखो। कीवर्ड कैन नॉट बी एब्रेविएटेड, एब्रेविएशन नहीं होगा, जो स्पेसिफिक है उनका होगा। एसक्यूएल स्टेटमेंट का कोई एब्रेविएशन नहीं, मींस सिलेक्ट है तो उसको पूरा सिलेक्ट लिखना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्ट फॉर्म। क्रिएट का क्रिएट पूरा लिखना पड़ेगा, टेबल का टेबल लिखना पड़ेगा। Arithmetic operation, we can perform arithmetic operation on numeric data as well as on date। डेट के ऊपर ऑपरेशन होता है। we know which are the mathematical operation: addition, subtraction, multiplication and division। Let us do display employee name, his salary and salary after incrementing 300 rupees for all employees। So here king salary is 24,000 and after adding 300, so 24,300। So so this data comes from table, this data comes from table, but means there is specific column, last name नाम की column है, salary नाम की column है, but whatever the third column displaying here, it is actually not available in table। ये table में ऐसी column नहीं है, but we have generated additional information। What will be the salary after adding 300 rupees in every person, in every salary? Clear? So we can do the plus, minus, multiplication, division। Why? Because salary is a numeric data। So numeric data के ऊपर हम mathematical operation कर सकते हैं। I cannot write select last name plus 100। Last name plus 100 I cannot write। Why? Because last name is a name of the employee। नाम के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है कैरेक्टर डेटा के साथ। इट इज कॉमन सेंस। क्लियर? ऑपरेटर प्रेसिडेंस, वी नो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हैज अ हायर प्रायोरिटी देन प्लस एंड माइनस। सी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी, लास्ट नेम, सैलरी एंड व्हाट विल बी द एनुअल सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय आफ्टर एडिंग 100। मतलब अगर मैं 100 रुपये सैलरी बढ़ा दूं तो आपको सालाना कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी, वो आपको फाइंड करना। सो हियर दिस क्वेरी विल जनरेट 12 इनटू सैलरी। सो सैलरी का एक ही बार वो 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा। सो माय मंथली सैलरी विल बी मल्टीप्लाइड विद द 12। एडिशन तो सिर्फ 100 रुपये का ही होगा। समझ में आ रहा है? आउटपुट तो आ जाएगा बट रॉन्ग आउटपुट आएगा। What is my question? I want to generate the report of employee, उसका नाम, उसकी salary, and I want to check what will be the annual salary after adding 100 rupees monthly। Why it happen? Because plus has a higher priority। पहले ultimately मुझे करना क्या था? salary plus 100 करना था, means salary will be incremented by 100 for 1 month। Now do the multiply by 12, so you will get the annual salary। सालाना salary आपकी कितनी होगी? Like that। But because of the operator precedence or priority of the operator, output is generated but it is a wrong output। मैंने पहले ही बोला डेटाबेस के पास कोई दिमाग नहीं है। गलत क्वेरी दोगे, गलत ऑपरेशन करोगे तो आउटपुट गलत ही आएगा। So what is the solution? What I can do here? अगर मुझे एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? How we can override the priority of operator? ब्रैकेट कर Yes, definitely आप ब्रैकेट कर दो। So instead of 12 I can do like this, salary plus 100। So bracket has a higher priority than multiplication। So first of all it will do this operation, salary plus 100। So monthly salary is incremented by 100 rupees। Now do the multiplication with 10। ये सब हम 4th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, कोई नया नहीं। क्लियर? मैं आपको हर एक क्वेरी रन करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यू कैन डू दिस, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, इट्स वेरी इजी। नन वैल्यू
अगर आपको याद है तो मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी थी. You have to search Yes, from sir. internet what is null. Yes, what is null? तो कितने लोगों ने पहले बताओ कितने स्टूडेंट है जिन्होंने ट्राई किया था नल के बारे में ढूंढने के, मिला ना मिला, समझ में आया ना आया वो अलग बात है, लेकिन आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया. Yes, किसको sir. आंसर पता है सही या गलत? एक स्टूडेंट नीट बोल रहा है, कोई लड़की बोल रही थी अभी आगे. सर नल मतलब एम्प्टी, Empty. नल मतलब एम्प्टी. कोई वैल्यू नहीं होगी. Unknown. Unknown. No value, not even zero. No value, sir. नॉट इवन कौन बोला? नॉट इवन. Not even zero. Zero. नॉट इवन जीरो. यस यस नॉट इवन जीरो, हाँ मतलब कोई वैल्यू नहीं होती. मतलब Yes, सब पूरा null एम्प्टी means. हो. Yes. See, there are some interview question about null. Null is very dangerous in database. We will see which are dangerous operation can be, which are dangerous circumstances can be possible by using null, and what is the solution that we will see step by step. हर एक प्रैक्टिकल में अलग अलग सॉल्यूशन आएगा उसका. But this is the exact definition of null. Null is a value that is unavailable, unassigned, unknown, and inapplicable. Means nothing. Null is not same as zero. Why? Because zero is numeric data. वो numeric तो है नहीं. It is also not a blank space, क्योंकि blank space is also a character. अगर मैं लिखता हूँ आशीष स्पेस पटेल, तो उसमें स्पेस भी काउंट होता है एज अ स्ट्रिंग वैल्यू. तो स्पेस मीन्स ब्लैंक स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर डेटा. Zero is a numerical data. Null is not a data. That's why null is not a zero. It is not a character, not a space. It is unavailable. मतलब कुछ नहीं. It is कुछ data available नहीं है. Unassigned. We cannot assign something. Unknown, inapplicable. Clear? Again, very important. Two null are also not same. Two null are not also same. Now you have to prove me that. आपको मुझे प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि सर ये दो नल अलग अलग है लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, अलग है. दिस इज योर एक्सरसाइज. दिस इज वन ऑफ द चैलेंज. थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए लेकिन ट्राई करना. हाउ टू प्रूव दैट टू नल आर नॉट सेम. ठीक है, अभी क्या समझ लो. चलो चलते हैं. Okay, now in employee table we have one more column, commission PCT, means commission percentage. How many percentage of commission you are earning per month? आपको कितना कमीशन मिलता है मंथली? Okay, उसका ही है. We have one column. So let us see. What how student present है आज? कोई स्पेशल है? या फिर 2 दिन का राष्ट्रप्रेम उमड़ पड़ा है? मेरे ऐसा बहुत होता है. हम एक दिन के लिए देश प्रेमी बन जाते हैं. 15 अगस्त, 26 जनवरी. Select last name, comma, salary, comma, commission received from employees. Now see out. किसको कमीशन मिलता है? देखो लाइक दिस. ये लोग हैं इनको कमीशन मिलता है 0.4%, 0.3%, 0.25%. ये लोग हैं जिनको कमीशन नहीं मिलता. मतलब करीब 30% लोग हैं, 25% लोग हैं जिनको कमीशन मिलता है. ओके, सो हियर those people who are earning the commission they have the value, but those people who are not earning the commission, for those people this value is null. ये null है, ये जीरो नहीं है, स्पेस भी नहीं है, it is null.
Okay, so whenever in a database, if something is not available, database will treat it as a null value. Okay. Now null value with mathematical operation. Now I want to generate employee name, his salary and his annual salary. एनुअल सैलरी आपकी कितनी है वो मुझे काउंट करना है. कैसे करेंगे? मतलब जो लोगों को कमीशन मिलता है उनकी सैलरी है प्लस कमीशन है. मानो कि इस बंदे का ले ले, ये रसेल है, उसकी मंथली सैलरी 14,000 है, लेकिन उसको 4% कमीशन मिलता है मंथली. सो 14 into 4 56. लेट अस एज्यूम दैट उसको 560 रुपीज मंथली कमीशन मिलता है, तो उसकी सैलरी क्या हो जाती है 14,560. ये मंथली सैलरी है उसकी. समझ में आ रहा है? अब उसकी एनुअल सैलरी क्या करेंगे आप, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो. We do not have to do the 14,000 into 10. We have to do the 14,000 plus 560 into 12. ये करना है. Clear? How I will generate the that report? Employee, his salary and सैलरी प्लस, अब सैलरी तो उनकी मंथली सैलरी हो गई, और सैलरी इनटू कमीशन, ये मेरा कमीशन को मिला है क्योंकि कमीशन के परसेंटेज है. सैलरी इनटू 4%, तो कुछ वैल्यू मिलेगी 560 रुपये या वॉट एवर वैल्यू. तो 560 वैल्यू प्लस सैलरी, ये मेरी हो गई मंथली सैलरी. क्लियर? ये सुनो સર તો સેલેરી પ્લસ સેલેરી અને એનું કમિશન એડ નહીં થાય એટલે 2 times નહીં થાય સેલેરી. मैथमेटिकल ऑपरेशन, दिस इज अ सिंगल, दिस इज द लेफ्ट हैंड वैल्यू, दिस इज द राइट हैंड वैल्यू. इसका ये ब्रैकेट किया है मैंने, सो इट विल डू दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन फर्स्ट. सो सैलरी इनटू कमीशन, सैलरी मेरी मान के 10,000 रुपये है और कमीशन मेरा 10% है, तो 10,000 इंटू 10% है, कितना होगा? ये एक 1,000 वैल्यू मिलेगी, ये 1,000 प्लस मेरी सैलरी, ये मेरी मंथली सैलरी हुई. क्लियर? नाउ रन दिस क्वेरी. कमीशन पीसीटी, ये क्या हुआ? ये मेरे एसक्यूएल स्टेटमेंट, लास्ट टाइम सैलरी, सैलरी प्लस क्या ब्रैकेट करते हैं. ओके, चलो ये हो. So what is the output? Ping. His salary 24,000, but annual salary null. कुछ नहीं. यहाँ पे उनका ही आउटपुट आया जिनकी कुछ सैलरी है, जिनकी कुछ सैलरी है, जिनको कमीशन मिलता है उनका. That means those people, it will generate the output of those people who earning the commission. Rest of the people, they have a monthly salary, but they do not have the annual salary. ये रिपोर्ट से ऐसा समझ में आता है. It means output is wrong. Why it is happening? Because we are performing mathematical operation with the commission column. Okay, for few people, they have the value of commission, and for rest of the people, they do not have the commission. So those people who do not have the commission, they have the value null. So whenever we execute this operation, it will do salary into null. जिनको कमीशन नहीं मिलता उनके लिए क्या होगा? सैलरी into null. So here the rule of database is that whenever we perform any mathematical operation with null, output will always null. उनका आउटपुट ऑलवेज नल आ जाएगा. तो नल इंटू सैलरी नल हो गया, अगेन इंटू 12 नल हो गया. इसीलिए इन लोगों का आउटपुट आपको दिखाई नहीं दे रहा है. समझ में आ रहा है? ये जीरो जैसा है, मल्टीप्लाई जीरो विथ एनी नंबर, आउटपुट इज ऑलवेज जीरो, लाइक दैट. सो नॉट ओनली प्लस, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन इफ यू आर परफॉर्मिंग, तो जिनको कमीशन मिलता है उनका कैलकुलेशन हो गया, जिनका नहीं मिलता है उनका क्या हुआ? नल मल्टीप्लाई विथ 3200, तो वो नल हो गया. दैट्स व्हाई द आउटपुट इज नॉट जनरेटिंग. क्लियर? सो प्लीज रिमेंबर दिस रूल.
Whenever we perform any mathematical operation with null, output will always null. Okay. इसीलिए अब ये मंथली सैलरी थी। अगर आपको देखो कमीशन के साथ कितनी सैलरी हुई उसकी 14,000 उसकी सैलरी हुई और कमीशन के साथ 19,600 हुई उसकी सैलरी। तो 560 मैंने 5,060 है यहाँ पे 40%। अब एनुअल सैलरी करनी है तो ये पूरा जो मंथली सैलरी हुआ उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो। तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम तो वही रहेगा, इन लोगों की एनुअल सैलरी आ जाएगी कमीशन वालों की, बट रेस्ट ऑफ द पीपल जिनका कमीशन नल है उनका आउटपुट नहीं आएगा। सो यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू हैंडल ये, दिस इज अ प्रॉब्लम। इसके कारण प्रॉब्लम हुआ नल के कारण, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। वी विल सी which are the solution that we will see in next practical. Now defining column alias. What is column alias? Alias means alternative name. Rename the column heading. Whatever the output is generating, this is the column heading. This is the last name. This is the salary. But what is this? If I will print this document and give it to someone unknown person, what he or she will understand it? उसको ये समझ में आएगा कि हाँ ये सब लोगों का नाम है, ये सबकी सैलरी है, लेकिन ये क्या है? सैलरी, सैलरी प्लस कमीशन, कमीशन प्लस है। It is not proper name. The column heading is not proper. Okay, so we can change the column heading of output. ये जो output generate हुआ उसका column heading हम change कर सकते हैं। After query और after expression write the column heading. कि ये क्या है? Annual salary. या फिर मैं ऐसा complete लिखूँ annual salary. Now run this. Now it will display annual salary. तो हाँ ये समझ में आ गया, ये लास्ट नेम है, ये सैलरी है और ये एनुअल सैलरी है। तो वी कैन गिव अनदर नेम। ये सिर्फ जिस्ट दिस आउटपुट इज ओनली फॉर दिस क्वेरी। ये क्वेरी में सिर्फ हमने कॉलम का हेडिंग चेंज किया, समझ में आ रहा है? अगर लास्ट नेम की जगह आपको दूसरा नाम देना है, एम्प्लॉई नेम, सैलरी की जगह लिखना है मंथली सैलरी और रन दिस। एरर है, क्या एरर है? बिकॉज हियर whenever you define the column alias and if your alias is more than one word, if it is more than one word, अगर सिंगल वर्ड है then no problem. एम्प्लॉई नेम एनुअल सैलरी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉई नेम लिखता हूँ, एम्प्लॉई स्पेस नेम, now it is not a single word, there are two words and this is the error because of two words. So if your column alias is more than two words, just write it in a double quotation. Salary, monthly salary and annual salary. यहाँ पे annual salary में error नहीं आई because I wrote annual underscore salary, so it is single word. See employee name, monthly salary, annual salary. अगर उसको भी यहाँ से space चाहिए तो put it in a double quotation. Employee name, monthly salary. So my column name is a last name, but I am generating the heading of the column which is more understandable to the normal people. समझ में आ रहा है? अगर हम column alias नहीं देंगे then it will print the name of the column, last underscore name. Whatever the name of the column it will print it. But if I want to change the heading, मुझे टेबल में exact column क्या है वो प्रिंट नहीं करना है, मुझे अपना वर्ड डालना है ताकि नॉर्मल पीपल समझ सके। तो मेरा I am a database administrator, I am a programmer, then I know that what is the meaning of last name. But normal person जिसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, it's not necessary he is a computer trained person. तो instead of last name मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ employee name, तो समझ में आएगा हाँ ये employee का नाम है, ये employee की monthly salary है, ये annual salary है. So we have to generate the output in a user friendly manner. Ultimately database is used to develop the software. ये सॉफ्टवेयर के पीछे काम करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में जो आउटपुट आएगा that output should be easy for my users. जिसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके लिए ये easy होना चाहिए समझने में.
If it will create confusion, then it will be difficult for my client to use my software. Okay, so this is the column alias. कॉलम का हमने अलग नाम दिया, दूसरा नाम दिया, that is your column alias. That we have seen. Concatenation operator. Now we are familiar with the string concatenation. If I want to join two columns, if I want to join two strings, then in C language you already know that you have a one function, string concat, strcat. strcat string concatenation. Same thing is here. We can concat more than one column in a single output. And operator is a pipe symbol. Now here, if you know structure of the table, we have two columns, first name and last name. ये दोनों को मिला के आपका नाम बनता है, तो मुझे दोनों प्रिंट करना है. Here लास्ट नेम या फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, and then I will use pipe. So here two columns are combined. Output of first column and output of second column both are combined. Salary वो तो सब as it is है, सीधा output. दोनों का combined नाम आया. स्टीवन किंग ये हन है, लेकिन बीच में स्पेस नहीं आया. Even see the heading of the column, first name, then pipe, then last name. So first of all I will do column alias. ये क्या है? ये एम्प्लॉय का नाम है. इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. चलो ठीक है, हेडिंग चेंज हुआ. Yes, there is no space between this. So if I want to, why it is not happen? Because this value come from table, this value come from table, and we have just combined it. If I want to put space between these two columns, if I want to put space between these two columns, तो space कहाँ से आएगा? Space तो है नहीं, डेटाबेस में हमने कहीं पे space नाम का टेबल तो रखा नहीं है. तो मैं रहा है, we can retrieve the data from table and that value is stored in a column. मैंने कॉलम का नाम तो लिख दिया, लेकिन स्पेस कहाँ से लाऊं? वो तो कोई कॉलम में है नहीं. So I can add space by using single quotation. So this operator will combine first name and space. अभी मुझे दूसरा ऑपरेटर चाहिए to combine space and last name. Please remember, here we have to put two operator. I need two concurrence operator because I have to combine first name and space and last name. Now see the output. अब बीच में स्पेस आया, स्टीवन किंग. अगर मैं थोड़ी स्पेस ज़्यादा बढ़ा दूँ तो आपको थोड़ा बड़ा लगेगा. एक ही दे रहा है, यहाँ पे जितना भी रखो एक ही स्पेस डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज ऑफ HTML ब्राउजर. आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते तो शायद ऐसा आउटपुट नहीं होता. लेट अस सी. यहाँ पे स्पेस जितना मैंने छोड़ा है उतना आएगा. Here because of HTML वो एक ही स्पेस रखता है. Clear? So whenever we add our own character in the output of the query, ये हमने अपना खुद का घर का डाला.
बाकी सब वैल्यू टेबल में से आ रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग. But this space is not coming from table. We have add our own characters. It is known as a literal characters. Literal characters जो हम अपने खुद के डालते हैं आउटपुट में, that is known as a literal characters. Literal characters are always in a single quotation. In double quotation, column alias. In single quotation, literal characters. Please remember. कॉलम एलियास ऑलवेज डबल कोटेशन में आएगा, सिंगल कोटेशन में लिटरल कैरेक्टर आएगा. अगर मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन डाला तो आइडियली एरर आनी चाहिए. यहाँ पे देखते हैं क्या आता है. बिकॉज ऑफ इट इज HTML, आई डोंट नो व्हाट विल बी आउटपुट. यस, राइट, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड. बाय, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन डाला है. इफ आई विल ऐड सिंगल कोटेशन, इट विल एज्यूम दैट इट इज अ लिटरल कैरेक्टर्स. इफ इट इज लिटरल कैरेक्टर, we required pipe symbol. Generally literal character के साथ pipe symbol होता है. It is not rule of thumb, but 99% केस में होता है. Clear? So this is the concatenation operator. We can concatenate more than 2 columns. जितनी कॉलम कंबाइन करनी है आप कर सकते हो. कॉलम 1 पाइप, कॉलम 2 पाइप, कॉलम 3 पाइप, जितनी पाइप डालना है डाल सकते हो. सर, नो प्रॉब्लम. हाँ सर हम 2 कॉलम को कॉन्केट करके उसका अलग से नाम दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अपने कॉन्केट किया और फिर उसको पूरा नेम देना है सिर्फ. अच्छा हाँ, आपने दिया है, सॉरी सर. ये किया ही है. हाँ, दोनों को कंबाइन करके उस आउटपुट का नाम मैंने दिया एम्प्लॉय का नाम. कर सकते. लिटिल कैरेक्टर हमने देखा. अगर आपको ऐसी लाइन प्रिंट करनी है, किंग इज किंग क्या है, सो सिलेक्ट लास्ट नेम, बंदे का नाम आएगा. इज लिटिल कैरेक्टर की जगह मैंने क्या लिखा, इज. देखो आगे पीछे स्पेस है, बीच में इज है. जॉब आईडी, किंग रिप्रेजेंटेटिव है, कोचर वाइस प्रेसिडेंट है, हैन किन है, होल्ड प्रोग्रामर है, पंच प्रोग्रामर है, लाइक दैट. सो इफ यू वांट टू प्रिंट लाइन, तो लाइन भी प्रिंट कर सकते हो. और ये क्या है, कॉलम एरियाज, एम्प्लॉय डिटेल्स, जो क्वेरी के हेडिंग में आएगा. लाइक दिस, किंग्स मंथली सैलरी इज इक्वल टू दिस. अगर आपको ऐसी लाइन प्रिंट करनी है तो किंग कहाँ से आएगा, लास्ट नेम. ये मैंने अपना डाला, मंथली सैलरी इज इक्वल टू, एंड सैलरी इज अ कॉलम. ये क्या है मेरा, कॉलम एरियाज, मंथली, सिंगल कोटेशन. देखो, if it is a single word, then no need to add double quotation. But if it is more than one word, it is necessary that you have to put double quotation. समझ में आ रहा है? डबल कोटेशन सिंगल वर्ड में डालोगे तो एरर नहीं आएगा. But if it is more than one word, then you have to put double quotation for column areas, monthly. You can print line like this. ऐसी लाइन भी प्रिंट कर सकते हो. Duplicate rows. Yes, we have a employee table, and I want to check how many different departments are there in my employee is working. कितने डिपार्टमेंट है? We have last column department underscore ID. ये एम्प्लॉई कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है? 61 in 90, हर एक का डिपार्टमेंट है यहाँ पे. So that person is working in which department? Okay, ये है यहाँ पे. So if you want to check how many departments are there in which my employee are working, तो कितने हैं? 160 नहीं, 160 डिपार्टमेंट नहीं है, 160 तो एम्प्लॉई है. What I can do here, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिखूँ, select department ID from employees, कितने आए? 160. क्यों? क्योंकि सी वैल्यू इज रिपीटिंग. 90 रिपीट हो रहा है, 60 रिपीट हो रहा है, 100 हो रहा है, 30 हो रहा है. It means if I want to check how many different department, so if I can write here distinct department ID,
तो एक डिपार्टमेंट एक ही बार प्रिंट होगा, नॉट रिपीटिंग। इफ आई रन इट 12 रोज आर देयर और उसमें से एक बंदा तो नल है, तो मतलब टोटल कितने डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं? 11। So, 100 department ID will be printed only just once. If you want to print unique output, single output, then एक कॉलम के नाम के आगे आप लिखो distinct. So distinct will print one time value. एक वैल्यू एक ही बार प्रिंट करेगा. Instead of distinct, you can also write unique. Unique department ID. Distinct और unique दोनों का मतलब तो एक ही है, एक ही आउटपुट आएगा. यू कैन आइदर राइट यूनिक, लेकिन ये कॉलम के आगे आएगा. अगर कॉलम के पीछे डाला तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये यूनिक का क्या मतलब हुआ? इट बिकम कॉलम एलियास ऑफ डिपार्टमेंट आईडी. इनवैलिड एसक्यूएल. क्यों? क्योंकि यूनिक रिजर्व वर्ड है. यूनिक इज अ रिजर्व वर्ड, तो आप रिजर्व वर्ड को कॉलम एलियास नहीं बना सकते. सी यूनिक आगे डाला, इट विल वर्क एज अ ऑपरेटर कि यूनिक वैल्यू प्रिंट करेगा. पीछे डाला, सो इट विल वर्क एज अ कॉलम एलियास. समझ में आ रहा है? पीछे डालने का कोई मतलब ही नहीं है. ओके, सो दिस इज योर duplicate rows. So if duplicate value is there and if you want to print single time output, you can write either distinct or unique. How to check the structure of table? Describe and table name. ये हमें पता है. टेबल का स्ट्रक्चर दिखाएगा, name of the column, data type, size and whether any constraint is there or not.